and I'm in IIT Kanpur. So today we'll study about vector algebra. This chapter is like mostly formula based chapter, which ध्यान देने हैं वो सारे टॉपिक्स पे ध्यान देने हैं जो मेजरली एग्जाम्स में आ सकते हैं, जैसे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और फिर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, इस सब के बेसिक फॉर्मूलेस जो डायरेक्ट फॉर्मूलेस हैं। सो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, और फिर देखेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, इस सिंपल है एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले स्केलर देखेंगे। फिर उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और ट्रिपल प्रोडक्ट सारे देखेंगे, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले विल सी अबाउट coplanar vectors. So coplanar vectors can be imagined like vectors which are in a plane, or equations governing that vectors are like, if there is a vector A vector, and there is a vector B, and a third vector is there, C vector. So uh, alpha times x times A vector plus y times B vector plus z times C vector is equal to 0. This is the condition for coplanar vectors. So providing x plus y plus z is equal to 0. So if a question is asked like this question, yes, the in the PYQs it was asked uh, with the using the condition of coplanar vectors. You can use the concept of scalar triple product also for finding the condition, check for coplanar vectors. So then we have uh, dot product, which is simple a dot b, which is a magnitude of b multiplied by cos theta. So theta is angle between a and b, and theta is measured when the two vectors are joined from their initial point, and the angle is seen. So proper measurement of angle is very important. Now, so we have application of dot product and combined with cross product. One of the applications is area of parallelogram. So area of parallelogram, if A vector and B vector is the adjacent side, so we have the area of parallelogram A vector cross B vector, and A cross B vector is magnitude of A, magnitude of B multiplied out by sine theta. And so if we know the area of parallelogram, then we will automatically can guess the area of triangle, which is derived by this A cross B, which is uh, we can learn the direct formula if the position vector of vertices is given. So you can find the position vectors of sides. Uh, so after, let's say A vector, B vector, C vector is the position vector of the vertices. Then two sides of the triangle is B vector minus A vector, C vector minus A vector, and so that
the logic here is that area of triangle is half of area of parallelogram. So if the area of parallelogram is A cross B, then the area of triangle will be half times A of A cross B. So here A is the side, not the position vector. So after finding the side, which is B vector minus A vector and C vector minus A vector. So we'll definitely get half B minus A vector cross C vector minus A vector. So after when you finally evaluate this thing, it will come to be half A vector cross B vector plus B vector cross C vector plus C vector cross A vector. So this is a formula for area of triangle. So the next thing is area of any quadrilateral. So if you have D1 and D2 as diagonals of D1 vector and D2 vector as diagonals of quadrilateral, then you will have the area as half D1 cross D2 magnitude of this. So yeah, area of quadrilateral. So after this is the area of like parallelogram, triangle, quadrilateral. So questions can be asked from this section also. इसमें एरिया के लिए फॉर्मूला यूज हो जाएंगे जैसे कि मे भी क्वेश्चन होंगे तो देखेंगे. सो डॉट प्रोडक्ट और ये था एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जिसमें एरिया यूज होता है. और हमारे काम के हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो जो तीनों बता दिए. और एक चीज होती है projection of a vector on second vector, which has which has direct formula, which is if you have to project a vector on b vector, then it you actually it is a length which a is making on b vector considering the angle theta. So it is a dot b vector divided by magnitude of b vector. This is the projection. So these are the normal formulas, uh, and these are the normal and basic formulas which you should know. And next is volume of tetrahedron, which is again the application of before that we'll see what is scalar triple product, because scalar triple product involves both the cross product and the dot product. So both combines to form scalar triple product, which is defined as, it is said that if there are three vectors and if you write in this manner a cross b dot c, then it is called a scalar triple product. Because triple product because यहाँ पे तीन वेक्टर्स इन्वॉल्व है और ये पूरी तरीके से डॉट नहीं है ना पूरी तरीके से क्रॉस है. सो इसके लिए बेसिकली हम एक अलग से रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं जिसको बोलते हैं बॉक्स ऑफ एबीसी. सो बॉक्स ऑफ एबीसी क्या है? नथिंग एल्स बट जस्ट हाँ. हेलो. हेलो. मैं अभी इसमें कुछ अभी लिखा नहीं अभी. ये नहीं दिख रहा, मेरी स्लाइड्स नहीं दिख रही है. एक सेकेंड.
ठीक है। Hello everyone, my name is Abhishek Yadav and I am second year student in IIT Kanpur. So आज हम वेक्टर्स के गो थ्रू करेंगे, ब्रीफ ब्रीफ डिस्कशन करेंगे वेक्टर्स के, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे सिंपल फॉर्मूलाज पे। और वेक्टर्स चैप्टर में मेजर मेजर चीज़ ये है कि आपको फॉर्मूलेज वगैरह काफ़ी ध्यान से याद करने हैं और फॉर्मूलेज नहीं मिस करने हैं। अगर आप कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ रही है तो भी अगर याद है फॉर्मूलेज तो फिर क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो जैसे कि सबसे पहला कि हम इंट्रो क्या करते हैं कि सिंपल डेफिनेशन वेक्टर की। इनिशियल पॉइंट है, फाइनल टर्मिनल पॉइंट्स क्या होते हैं। जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है उसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और जहाँ पे वेक्टर एंड हो रहा है वहाँ पे हम उसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। तो हम फिर एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं कि एक वेक्टर जो कि लेट्स से ए कैप ए कैप इज अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, जिसका फॉर्मूला है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो सिंपली यूनिट वेक्टर्स हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में एज एज इट इज बोल देते हैं यूनिट वेक्टर, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, सो मीन्स दैट इट हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 1। सो डायरेक्टली आप एक इक्वेशन इससे बना सकते हैं। अगर कुछ वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया रहेगा तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 1, सो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल टू 1 कर देंगे तो आपका एक इक्वेशन सिंपली वहाँ से आ जाता है। फिर हम ए बी वेक्टर डिफाइन करते हैं। इफ अगर एक स्पेस में ए बी वेक्टर डिफाइन करना है तो हम उसको बोलते हैं कि पोजीशन ऑफ बी वेक्टर माइनस ऑफ पोजीशन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। यहाँ पे काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ बी वेक्टर लिख देते हैं, बट ये अपोजिट होता है। ए बी वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। ओके। सो फिर हम वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि वेक्टर किस किस तरीके से हो सकते हैं। तो वेक्टर्स कोलिनियर हो सकते हैं, कोप्लेनर हो सकते हैं, और नॉन पैरेलल, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग एट परपेंडिकुलर एंगल्स। बहुत तरीके के वेक्टर्स आपस में रिलेट कर सकते हैं। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम कंडीशन ऑफ कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर इज अ वेक्टर जिसमें टी एन नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर हम ले लें तो उनको हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके और उनका एल्जेब्रिक सम जीरो कर दे अगर, तो वो कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स ले लें, एक स्केलर है एक्स वाई जेड, और ए बी सी इज अ वेक्टर, और उनके रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन हम करें अगर एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, सो व्हाट वी हैव इज if this equation gives you zero, so हमारे पास ये बोल सकते हैं हम, we can conclude from this equation कि a vector b vector c vector is a coplanar vector। so this is a condition for coplanar vector। और इसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट और स्कोर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो हम उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन का, विच इज स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर टेबल प्रोडक्ट, जो कि इस क्वेश्चन में यूज होगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें जैसे कि ये यूज हो रहा है, दिस क्वेश्चन, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो हम इसको फॉर्म करके इसके फॉर्मूलेस कैसे होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूलेस याद होंगे तो तभी लाइक ये क्वेश्चंस तब आपसे सॉल्व होंगे बहुत इजीली। तो हम आते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर है तो सिंपली डिफाइन कर देते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा। सो दिस इज अ if f and d are vectors then
This can be defined as this. You can see a dot b is f vector is a, d vector is b vector, then it is f d cos theta. So this is a definition of uh, dot product. So this is a very simple definition. So we will see the application of this. So let's say you want to uh, project this vector on this vector, and this vector is, let's say this vector is a vector and this is b vector. So what we have is, let's say it has angle of around theta. So this section projecting this means this length we have to calculate the projection says. So it is a dot b. If we do a dot b, it will come a vector, a magnitude of a, magnitude of b cos theta. But this length is, let's say this is a, this length is a cos theta. So we have to divide by magnitude of b. This is b. Okay. So this is b and this is a. So the formula becomes, for the projection of a vector on b is a dot b divided by magnitude of b. Okay, it is easy to remember. Projection of a on b is equal to a dot b by b. Second vector comes in the denominator. And let's say we have two vectors, a vector and b vector. So this is the dot product. Now this dot product has this application. So if you have found this vector, let's say this was any c vector. Okay, then what you can do is you can also find this vector, which is perpendicular to b vector and joining this point and this point. So which is, you can use the law of addition of vectors. So you will add this vector a vector plus this, let's say this is some alpha vector. So a vector plus minus, if you have considering this direction, then a vector minus alpha vector, and we have the magnitude of this vector, and the direction is b cap, in the direction of b, which is b cap. So what is b cap? This is magnitude of b divided by b vector divided by magnitude of b. So we have this vector, this vector, and this vector. So we can find using the triangle of addition this vector. So this is the only type of question which can be asked from dot product. So largely combination of dot product and cross product are used, which is major questions consist of like scalar derivative product that employs cross product and dot product also. So we'll next move to cross product. What is cross product? So cross product is nothing but it is the a cross b represented as a cross b, which is we write as a vector magnitude of a vector magnitude of b vector times sine theta. So in the dot product it was cos theta, here it is sine theta. So what is the physical meaning of this cross product? So it is the physical significance is that if a vector and b vector are some, let's say this is a parallelogram, okay, and this vector is a vector and this vector is b vector. So what is the area of this thing, this whole parallelogram? So what is this area is a vector cross b vector. So application of cross product is finding the areas of some kind of figures. Let's say this is a parallelogram. What is the area of let's say triangle? Triangle is half of it, half of this. Okay, this point, well, a half of it. Okay, you can understand this point is here. So we are considering half of this. So what is the area of this? You will say half of a cross b. Yes, a cross b. If
this side is B and this side is A. We are considering the vector starting from the same point. If the position vectors of this point and this point and this point are given, so first we'll find this vector by, let's say this is position vector, has this position vector is, let's say, A, okay, and this is B, okay, this is B, and this is C. So what we do is we find uh, this vector, which is AB vector and AC vector in terms of position vectors. And then we can find the formula as, let's say this is A and B, C. So half of this was A cross B. So half of this is half A cross B, which is B minus A vector. This B minus A is this vector, and C minus A is this vector. So it is half B vector minus A vector cross C vector minus A vector. So this is very basic area of the triangle. And the important thing is when you expand this B minus A vector cross C vector minus A vector. So what happens is uh, it reduces to something like half of A cross B plus B cross C plus C cross A. It is a cyclic, it is in cyclic order. So uh you can remember it very easily. The cyclic order is A cross B plus then B cross C then plus C cross A. So this is a very basic formula, and thus this is a this whole application of algebra, vector algebra, which is in total the finding in our scope. It is finding the area. So let's say we have found the area of parallelogram and derived the area of triangle from the area of parallelogram, which was just half of this. So, and if the position vectors are given, we can definitely convert it to sides, like finding this sides as the vector and then finding the area. And next is, let's say we have to find the area of a quadrilateral. So the quadrilateral, if let's say we are given its diagonal vectors, which is d1 vector and d2 vector, the same thing applies here. So you can, the area of the quadrilateral is half d1 cross d2. D1 and d2 are the diagonal vectors of the quadrilateral. So half magnitude of d1 cross d2 vector. So this is simple area. So now we come to involving three vectors. Till now we were involving two vectors. Now we will involve three vectors, which is which forms our which this question is, let's say this question, which involves uh, three vectors. Three vectors. I'm considering this is as one vector, second vector, third vector. So which is called, if a representation is shown, A vector the cross V vector dot C vector. So this is called box of ABC, which is scalar triple product. Uh, and the properties of scalar triple product, some properties which I would like to mention is, uh, let's say if ABC, A vector, B vector, C vector is, you can change it in cyclic order and the value remains same. So this is a very unique property of scalar triple product. So um, and if you change any two vectors, so the value of box, which is scalar product triple product, changes by a negative sign, by a negative value. Okay, let's say it has value alpha. ABC vector has value alpha. Then my ACB, box of ACB will have the value as minus alpha. Okay, so the next is this property. We can, like, considering the box, we can find if whether the three vectors uh, coplanar, are they coplanar or not, by considering that the box is equal to 0. If the box is equal to 0, then what happens is we can say that the vectors are coplanar.
So this is the application which I already told you. If uh, when we are moving towards the end of the lecture, you will see that no independent formula will be used. You will always have to use some kind of mixed formulas. Like in this question, we have it is just in this question. Yes, in this question, we have used vector scalar triple product and use the definition of like this is a you can observe this is a unit vector which I had already told you the definition. It has magnitude of 1. If the vector has magnitude of 1, then it is a unit vector. Okay, so we will move to the questions after completing this the vector triple product and the what are independent and linearly independent and linearly non-independent equations, and what are coplanar. We can also find coplanarity of the points using the vectors. So and important we can also find uh, volume of tetrahedron using the box. Okay, so this we can mm, which is just the application of scalar triple product. So we will next move to vector triple product, which is A cross B cross C, which uh, please take care that when we are considering A cross B cross C, then the bracket is on B cross C. You have to just learn the formula, which is equal to uh, A dot C B vector minus A dot B C vector. You already know the formula. You will just apply the formula. You don't have to like derive this, and it is not also that much important how it is derived for now. It doesn't generally it doesn't क्वेश्चंस में ऐसे यूज तो नहीं होता है कि like इसका डेरिवेशन यूज हो गया. So this is the formula, and so I had told you about formulas like of parallelogram, area of quadrilateral, area of triangle, volume of uh, parallelepiped. How to calculate? I'll tell you right now, which is just box ABC. Simply, what is box ABC? Have already told you. I've already told you about this, which is equal to A vector dot B cross C vector. Okay, so okay, there are some properties जैसे कि बॉक्स के और सारे प्रॉपर्टीज है जो मैंने मेंशन नहीं किए थे. मैंने एक साइक्लिक ऑर्डर वाला मेंशन किया और एक मेंशन किया अबाउट कोप्लेनरिटी यूजिंग द लाइक कैसे कोप्लेनर यू प्रूफ करते हैं. वो चीज एबीसी अगर जीरो हो जाता है तो वो वेक्टर तीनों कोप्लेनर हो जाता है. सो और प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर हम ए इस ऑर्डर में लिखें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो दिस इज इक्वल टू ए बी सी बॉक्स का होल स्क्वायर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. हमको यूज पड़ सकता है इसका. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. हाँ, लास्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन which is simply 1/6 of box ABC. You just have to learn the formulas, and ABC are starting from a single point, like एक ही point से. Let's say there is a tetrahedron OABC. So O is the origin and ABC is the position vector of A, B and C respectively. So the volume of tetrahedron is 1/6 ABC, box of ABC. So this till now we have just learned about the formulas. So now we'll see how to apply it. Let's say just for the scalar triple product we have this question. So हमारे पास दिया हुआ है if A vector is equal to 1/10 vector 1/√10 3
plus k cap. B vector is equal to 1/7 2i plus 3j minus 6j. So बिफोर सीइंग द क्वेश्चन हमारे पास इतना ऑब्जर्वेशन आ जाता है कि ये जो वेक्टर है ये तो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1/√10 इधर, और _3² + 1² इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 10। देन √10/√10 इज 1। एंड सेम हियर, ये ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो। इन दोनों को जोड़ इसका मैग्नीट्यूड निकालो। 4 + 9 + 36 is 49, and root of 49 is 7, then it has also magnitude of 1. So we have asked this value, which is 2 a vector minus b vector dot a cross b cross a vector plus 2b vector. Okay, so here we can see कि हमारे पास कोई भी इस क्वेश्चन में ऐसा क्लू तो नहीं आ रहा है कि ये सारी वैल्यूज कहाँ से आएंगी। सो हम डायरेक्टली ऐसा करते हैं, ये इक्वेशन स्टार्ट करते हैं इसको लेके। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन जब लेके स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा कि ये जो चीज़ लिखा हुआ है, ये जो चीज़ लिखा हुआ है ये है आपका बॉक्स। ये 2a वेक्टर माइनस बी a क्रॉस बी, ये सारे बॉक्स में, क्योंकि मैंने बताया था a, इसको अगर एक वेक्टर कंसिडर करें, a डॉट बी क्रॉस सी इज बॉक्स ऑफ एबीसी। सो ये बॉक्स ऑफ एबीसी आ गया। सो और हम डेफिनेशन वाइज उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है a डॉट बी क्रॉस सी, तो हम उसको a क्रॉस बी डॉट सी भी कर सकते हैं। सो इसने यही किया हुआ है कि a क्रॉस बी पहले लिख दिया है, और बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी लिख डॉट ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो मेरे पास एक और ऑब्जर्वेशन ये आ गया है कि ए डॉट बी परपेंडिकुलर है। सॉरी फॉर दिस। हाँ। हम्म ये हमारे पास आ गया है कि ए डॉट बी परपेंडिकुलर, ए और बी परपेंडिकुलर है। कैसे? आप सिंपल इसको जब ए डॉट बी आप करोगे, हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली डॉट कर सकते हैं और देख सकते हैं। सो हमारे इस क्वेश्चन में बेसिक ऑब्जर्वेशन काम आते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर है। ओके, सो हमारे पास ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं सिंपली, विच इज इक्वल टू 1, जो कि हमारे पास आ जाएगा। ये 1 है, ये 1 है, और ये 90 डिग्री है। अगर ए डॉट बी 0 है तो व्हाट इट मीन्स, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, एंड कॉस थीटा इज 0 है एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। So here we come to the like फाइनल सोल्यूशन। अब आपको दिख जाएगा कि जब हम इसको बाहर निकालेंगे बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो हमें मिलेगा कि ये बन जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर हम इसको डायरेक्टली क्रॉस करेंगे तो ए क्रॉस ए 0, ए क्रॉस बी यहाँ से आएगा माइनस ए क्रॉस बी, यहाँ से आएगा +4 बी क्रॉस ए। सो ये माइनस ए बी क्रॉस ए को हम माइनस ए क्रॉस बी को हम प्लस ए क्रॉस बी लेके इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5। ओके, तो 5 आ जाएगा हमारे पास। और ये भी ए क्रॉस बी है, ये बी क्रॉस ए है। सो हम जब फिर से रिवर्स करेंगे इसको तो ये माइनस ए क्रॉस बी हो जाएगा, और ये सेम वेक्टर हो जाएगा। सो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर टाइम्स -5। So we have -5 and a cross b. What is a cross b? A cross b ऐसे निकलेगा कि हमारे पास a और b वेक्टर ही है। सो एक तो हो सकता है आप a क्रॉस b इधर से निकालो, जो कि बहुत ही लंबा मेथड पड़ेगा। हमारे पास सिंपल पता है कि a क्रॉस b होता है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा। साइन थीटा वी हैव थीटा इज 90 डिग्री एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a and b is 1, so this is equal to 1, so we have put as 1, and
This is -5, so answer is -5. So this option is correct. So important thing here is in the last you may get confused, और कभी कभी जल्दी जल्दी में ए क्रॉस भी निकालने के लिए वापस इसको ए क्रॉस बी करके फिर उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर करते हैं, बट अब हमको क्विक ऑब्जर्वेशन देखते रहे। आप अगर क्लियरली ये इन्फॉर्मेशन लिखोगे तो आपको दिख जाएगा कि उसको यूज़ करना है बाद में। ओके, सो ये था बेसिकली यूज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन तो पता ही चल गया। सो उसके भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यूजेस आ जाते हैं क्वेश्चंस में, बट क्वेश्चन मोस्टली अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से पूछे जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि डेफिनेशन है हमारा, अगर देखेंगे तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। ओके, सो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो सिंपली आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, और आपको ज़्यादा विजुलाइज नहीं करना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे मेन बाकी सारे जगह पे अगर आप विजुलाइज करोगे तो आपको अच्छी क्लियर पिक्चर दिखेगी, बट आप वेक्टर टेबल प्रोडक्ट में जब विजुअलाइजेशन पे जाओगे या फिर वेक्टर चैप्टर में एज अ होल आप विजुअलाइजेशन पे ध्यान दोगे और फॉर्मूलेस पे नहीं दोगे। अगर फॉर्मूलेस नहीं याद है, यू आर ट्राइंग टू derive the formula by like basic steps, तो this can lead to sometimes wrong answer. So focus on the formulas for this chapter at least. Okay, बाकी सारे chapters में आपको proper derivations important है, but this chapter requires only formulas. मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इतने सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हमको कुछ मेजरली फिगर बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लिखेंगे और सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे कि वी हैव दिस क्वेश्चन, तो व्हाट दिस क्वेश्चन इज, इट सेज कि a vector, b vector, c vector are such that a vector plus b vector plus c vector is equal to 0. Okay, so this is the, so इतना तो हमको पता चल गया कि ए बी सी कोप्लेनर है। ओके, सो मे बी उसकी जरूरत ना पड़े क्वेश्चन में, बट हमको यहाँ से पता चल गया। हमारे पास ए की वैल्यू दे दी गई है, ए की वैल्यू दे दी गई है, बी की वैल्यू दे दी गई है और सी की वैल्यू दे दी गई है। ओके, सो एंड वी हैव आस्क्ड कि एंगल बिटवीन बी एंड सी। ओके, तो ठीक है। सो बी एंड सी में एंगल दो तरीके से निकल सकता है, या तो हमारे पास ए क्रॉस बी पता चल जाए, या तो हमारे पास ए क्रॉस ए डॉट बी पता चल, बी डॉट सी पता चल जाए, या बी क्रॉस सी पता चल जाए। सो हमारे पास जब ये इक्वेशन दी गई है तो हम इसी से कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके हम कोशिश करते हैं कि बी डॉट सी या बी क्रॉस सी किसी तरह निकाल लें, क्योंकि जनरली क्या होता है कि डॉट से इक्वेशन सॉल्व करना इजी रहता है, तो अल्टीमेटली हम डॉट यूज करते हैं। सो जैसे ये इक्वेशन है, हम इसको सिंपली क्या करेंगे, सी को उधर भेज देंगे, ए को उधर भेज देंगे, क्योंकि हमको बी और सी में एंगल चाहिए, तो बी और सी को एक साथ रखेंगे। अगर हमको ए और सी में एंगल चाहिए होता तो हम ए और सी को एक साथ रखते हैं और बी को उधर भेज देते हैं। तो फिर उसके बाद हम इसको बी डॉट सी में कन्वर्ट करने के लिए हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। सो उसको हम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर कर देते हैं। ओके, इसका जब हम स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एंड डोंट वरी ऑफ द नेगेटिव साइन बिकॉज ये फिर प्लस हो जाएगा एक्चुअली में। तो इन दोनों को स्क्वायर करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप इधर आते हैं और हम यूज़ करेंगे दिस इज इक्वल टू बी का होल स्क्वायर विच इज बी डॉट बी। जब हम ए बी प्लस सी डॉट बी बी प्लस सी कर रहे हैं, सो इट विल बी 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 डॉट बी विच इज अल्टीमेटली बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर बिकॉज एंगल बिटवीन बोथ आर 0 डिग्री। So this becomes magnitude of b square. Okay, and cos 0 degree is 1. So this becomes
b square, this is c square, and plus 2b dot c. So finally we are approaching towards answer, our answer कि अगर हमारे पास यहाँ से b डॉट c निकल गया, ओके, तो हमारे पास b और c की मैग्नीट्यूड पता है, ओके, ये दोनों, ये 5 दिया गया है और यहाँ पे 3 दिया गया, ओके। सो हमारे पास बी डॉट सी आ जाएगा यहाँ से। अब बी डॉट सी को हम एक्सपेंड करके वापस यहाँ पे लिख देंगे कि हमको एंगल पूछा था, तो कॉस थीटा या साइन थीटा हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस ए डॉट बी का डेफिनेशन, बी डॉट सी का डेफिनेशन के हिसाब से ये बी मैग्नीट्यूड, सी मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा इक्वल टू 7 स्क्वायर, दिस इज 25 प्लस 9 which is 34, so 49 minus 34 which is equal to 15, ठीक। सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फिर से रख देंगे 5 और इसकी वैल्यू हम रख देंगे 3, 3 और 5, और इसको जब सॉल्व करेंगे कॉस थीटा यहाँ से, तो फिर हमारा आंसर आ जाता है। तो ये तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। सो हाँ, बस बेसिक पॉइंट इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें पता नहीं था कि अप्रोच कैसे करनी है। सिंपल हमें पता चला कि हमको एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा या साइन थीटा हमारे पास कहीं ना कहीं इक्वेशन बनाना चाहिए। और इक्वेशन हम बनाएंगे कैसे, जो इक्वेशंस दी है इसी को मैनिपुलेट करेंगे। सो एक तरीका ये भी हो सकता था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर कई बच्चे सोच सकते हैं कि एक थोड़ा सा जिसमें बी डॉट सी आ जाए, तो हम ऐसा सोच सकते हैं, कई लोग सोच लेते हैं कि इस पूरे को ही हम स्क्वायर कर दें। लेकिन जब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इन दोनों को जब इन तीनों को हम स्क्वायर कर देंगे इधर लेफ्ट में रख के, तो उसमें जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स आएंगे इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों कंबाइन करके, तो उसमें से हमको 3 वेरिएबल आएंगे। ए डॉट सी नहीं पता रहेगा, बी डॉट सी नहीं पता रहेगा, और ए डॉट सी नहीं पता रहेगा। तो वहां से हमको बेसिकली चीज़ें नहीं पता चल पाएंगी। सो इसीलिए हम लोग इसको लेफ्ट में भेजें। सो एक डाउट ये आता ही है कि हम इसको स्क्वायर कर देते, तो वहाँ से इक्वेशंस में हमारे पास तीन चीज़ें निकालने को मिल जाती है। तो वो वाला इक्वेशन नहीं, उसको स्क्वायर नहीं करते डायरेक्टली, हम उसको एक लेफ्ट में भेजते हैं और फिर स्क्वायर करते हैं, ओके। सो ये क्वेश्चन आया था 2002 में। सो इसका फाइनल आंसर है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 विच इज 60 डिग्री। सो 60 डिग्री, ओके, डिग्री इज मिसिंग हियर, so this is 60 डिग्री। तो लेट्स से अगर रेडियंस में भी पूछ सकते, we will try to solve the next question and learn some theory from itself, that question itself, okay, which is so, but here okay, answer is also same, maybe any coincidence. So let a vector and b vector are two unit vectors. So here it is an important line which मैंने आपको पहले ही बोला था कि यूनिट वेक्टर अगर लिख दिया है, तो आपको पहले माइंड में वो इक्वेशन बना लेनी कि ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1, फिर if the vectors c vector and d vector is combination of these two are perpendicular, so perpendicular दिया गया है, so c vector and d vector is perpendicular, okay। तो हमारे पास देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, सो एंगल बिटवीन ए एंड बी से हमको फिर क्लिक करेगा कि ए डॉट बी चाहिए या तो ए क्रॉस बी चाहिए, तभी हमारे पास आ पाएगा। सो हम फिर से ये सिंपली यहाँ पे जो हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले उसी को हम अप्लाई कर देते हैं बिना इसको ज़्यादा दिमाग लगाए हुए। तो हमारे पास आ जाएगा सी डॉट डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सी डॉट डी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब ये है कि हम इसको और इसको डायरेक्टली डॉट कर देते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ से आ जाएगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर, ओके। सो हम इसको डायरेक्टली अगर इंडिविजुअली डॉट कर देते हैं तो ये आएगा ए डॉट ए विच इज़ ए स्क्वायर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ए डॉट ए आप डायरेक्टली उसको
Recording in progress. सो ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, सो माइनस एट बी स्क्वायर। ओके, सो हमारे पास आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 1, बिकॉज दिस टू आर यूनिट वेक्टर। सो हम जब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रखेंगे, बी की वैल्यू भी 1 रखेंगे, तो हमारे पास आएगा 6ab इज इक्वल टू 3। ओके, 6ab is equal to 3. Now ab is nothing but a vector b vector cos theta, and a vector magnitude of a vector and magnitude of a b vector is 1. So we have cos theta is equal to again 1 by 2. Okay, so this was the same answer but not the same question. We have this the different thing, which is combination of two vectors given in this question. Or okay, so 1 by 2. So I think this option. Okay, हाँ, yeah, लिखा हुआ है 3। ठीक, so this option is correct. तो यूनिट वेक्टर्स आप समझ जाना कि ये बेसिकली ये क्वेश्चन जो था एंगल, और ये वाला से ये क्वेश्चन, बेसिकली ये क्वेश्चन में यही था, जब एंगल पूछा जाए तो आप डॉट के सोचो, हमेशा कॉस आ जाएगा बीच में। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सोचने के लिए नहीं है। अगर हमको एंगल पूछ दिया है तो कॉस थीटा लाना है, ए डॉट बी लाना है। सिंपली आप इक्वेशंस का यूज़ करके, प्रॉपर इक्वेशंस का यूज़ करके उसको ले आओ किसी तरह। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले एक नॉर्मल थ्योरेटिकल जो कि याद रखना चाहिए, कभी कभी डेफिनेशन में यूज़ हो जाता है, वो है मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियरली नॉन इंडिपेंडेंट, लाइक लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। सो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, फर्स्ट प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। लेट्स से इफ x1 वेक्टर, x2 वेक्टर, up to xn vector are n non-zero vectors, and k1 k2 k3 are n scalars. Let us combine these two, k1 x1 plus k2 x2 plus up to kn xn vector. Okay, x1 x2 are vectors and k1 k2 are scalars. If this sum is equal to 0, and if it implies that the only solution to this is k1 is equal to 0 and k2 is equal to 0 and kn is equal to 0 up to kn is equal to 0, then we say that vectors x1 vector, x2 vector, xn vector are linearly independent vectors. So हमारे पास अगर कोई और तरीका नहीं मिल रहा है इस वेक्टर्स को कंबाइन करने का, सो जैसे ये वेक्टर है और ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, सो अगर हम इन तीनों वेक्टर्स को एक एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से अल्फा, बीटा एंड गामा, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, तो अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर प्लस गामा सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। एंड दिस अगर ये इम्प्लाई करता है कि अल्फा 0 होना चाहिए, बीटा 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, तो ये बोलेंगे कि हम ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि हम उसको किसी भी तरीके से जीरो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो प्लेन में नहीं है, एक दूसरे के वेक्टर के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख पा रहे। Okay, so this is the definition of independent vector. The definition of uh, dependent vector is something just similar to independent vectors, uh, which is, let's say if you have x1 vector, x2 vector, and up to xn vector, okay, then they are said to be linearly dependent vectors. That is, if k1 x1 vector, k2 x2 vector up to kn xn vector, and if there exists at least one, let's say kr is something between k1 and kn,
including k1 and kn, which is says that if there exists at least one kr not equal to 0, like we are able to make the sum 0 without making one scalar as 0, then we say that these are linearly dependent vectors. So let's say these vectors are in a plane. So, and we are, let's say we, mm, we say minus alpha, let's say these are, let's say we multiply this vector a vector by minus 1 something, and it becomes this, and this vector is minus something, so it becomes something, the length changes accordingly, and these two vectors have some which is in direction of something here. We will make sure that the direction is opposite to exactly the vector in between these two vectors, and magnitude of equal to this. So we have multiplied this by something negative, this by something negative, and it made the sum exactly negative of this. This is only possible if the vectors are linearly dependent or they are in a single plane, which is coplanar vectors. Okay, so this is the definition of linearly dependent vectors. Okay, so and before that, we don't have a question of vector table product, so I want to make emphasis on a particular properties of vector table product. अगर वो vector table product के बारे में कुछ पूछ लेते हैं, तो vector table product का सिंपल डेफिनेशन तो याद रखना ही है, लेकिन ये भी याद रखना है कि a क्रॉस b एक ब्रैकेट में क्रॉस c डज नॉट इक्वल टू a क्रॉस b, b क्रॉस c, b क्रॉस c एक ब्रैकेट में, these two products. So next, and we have a concept of shortest distance between two lines. Okay, let's say these are two lines which is not intersecting and not parallel, which means skew lines. Okay, so the shorter distance is, you just need to remember this concept, that shortest distance between any line is along their uh, perpendicular to both. Okay, along their perpendiculars. Okay, so let's say we have this point given and this point on this line given, then simply join this and take the projection on this perpendicular. Okay, common perpendicular. So uh, projection, you have already told how to take the projection. So this is the projection on, will be the projection on this. Okay, parallel to this, and the length will be equal to this. So this is, let's say we have, this point is, let's say b. Okay, and this point is, let's say a. So, and this is l, and this is m. Okay, this is m. Okay, let me erase this. Okay, this is m. Okay, and we have to find the, this is actually, this is lm line is perpendicular to both these lines, and this line is in the direction of p vector, and this is in the direction of q vector. So I'm just covering the important points जो कि वेक्टर से आ सकते हैं, जो कि इसका एप्लीकेशन है इसमें, तो इसलिए मैं ये भी कोशिश करो कि ये भी कवर कर दे। ठीक है, ये इसको हम लिख देते हैं, लेट्स से क्यू वेक्टर। सो हमारे पास ऐसा आ जाता है कि अगर ये पॉइंट, इस पॉइंट को भी हम डिफाइन कर देते कि इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा
उसको लेट से ए है तो हम ए वेक्टर ही लिख देते हैं। ओके, और ये बी है तो बी वेक्टर ही लिख देते हैं। ओके, तो हमको निकालना है एल एम की वैल्यू। सो हाउ वी विल कैलकुलेट एल एम। मैंने बताया कि ए बी का प्रोजेक्शन हम एल एम पे ले लेंगे। सो ए बी पहले ए बी वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, सो इट विल बी बी वेक्टर। सो you have to remember this key, ab vector is not a vector minus b vector, it is b vector minus a vector. Okay, so this is b vector minus a vector which is the ab vector. अब हमको पोजीशन लेना है इस पे। So lm is the common normal to this and this. So let me say there is a vector which is p cross q. So मुझे एक वेक्टर बनाना था जो कि p वेक्टर के भी परपेंडिकुलर रहे और q वेक्टर के भी परपेंडिकुलर रहे। सो मेरे पास एक वेक्टर आ गया p क्रॉस q वेक्टर। मैंने ऐसा वेक्टर बनाया इन दोनों को क्रॉस करके। सो ये जो पूरा कंप्लीट वेक्टर है ये p के भी कम परपेंडिकुलर है और q के भी परपेंडिकुलर है। ओके, सो हमारे पास एक वेक्टर आ गया जो कि p और q दोनों को परपेंडिकुलर है। अब हमको इस पे प्रोजेक्शन लेना है, मतलब बेसिकली हमारे पास एल एम के डायरेक्शन वाला वेक्टर आ गया। हमको इसको इसको परपेंडिकुलर इस पे प्रोजेक्शन लेना है। सो हम क्या करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से कि ये ए बी वेक्टर का इस पे लेना, तो ए बी वेक्टर डॉट एल एम वेक्टर डिवाइडेड बाई द एल एम वेक्टर इटसेल्फ। सो एल एम वेक्टर इज पी क्रॉस क्यू। सो यहाँ पे पी क्रॉस क्यू रख देंगे, पी क्रॉस क्यू। तो इम्पोर्टेंट थिंग वाज कि किसी के भी लाइन के अलोंग परपेंडिकुलर इस तरीके से हम लिख सकते हैं पी क्रॉस क्यू। और सिंपल यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि हम एल एम की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम इसको एज अ मॉड ले लेते हैं कि इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाई पी क्रॉस क्यू। ओके, पी क्रॉस क्यू। सो और मॉड है तो ये यहाँ पे भी हम मॉड लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये ओवरऑल मॉड ही है। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एल एम वेक्टर। ओके, which is value of element vector, not element vector, because this is on the right hand side it is uh, scalar and left hand side this is, we have to apply mod here also. Okay, so this is a very important concept because I didn't have a question from this. I thought to explain it separately. We have some important point about this thing is we have covered already the area of parallelograms and area of area of triangle and using the box product. And yes, so this is the we have calculated this in the case when the lines are skew lines. Okay, so let us say the lines are, let's say the lines are parallel. Okay, so if this is p, okay, this is p, and automatically this is will be also p vector because I have applied the condition that the lines are should be parallel. Okay, and we have to find the distance between these.
So we have, let's say this distance is d. How we will calculate d? So again, we need to know any 2 points. Let's say this is point a1 vector, and this is let's say a2 vector. Okay, so we have to calculate the value of d. So simply we can say that d will be the projection of this vector on this vector. Okay, so you- let's say we want to calculate this value, then this is also 90 degree. Okay, and considering the projection of this vector and this on this vector, so how can we write this? We can write it in a different form, like this will be a2 minus a1 sine theta, where sine theta is the angle between this this vector a2 minus a1 vector and the b vector. Okay, so this is the a2 minus a1 vector and this vector, they have an angle of theta. Okay, so the d will be by this, considering this triangle, the d is simply we can write it as d is equal to, we will use mod as we are writing the value of d. Okay, so this will be, so this will be b cross uh, a2 minus a1 vector. Okay, sorry, a2 minus a1 vector. So this is because we have uh, used the simple, considering the triangle, use we have the, we know simply the value of d. What is d? It is a2 minus a1 cos theta, sorry, sine theta. So if we are considering b vector as a vector, then we have to divide here. We have, as to bring sine theta in the equation, we have to use the cross with the b vector. Now we have an extra magnitude of b on the upper side, so you will use magnitude of b in the denominator for uh, canceling these two. Okay, this is the so this is the value of d. This is the value of d when the lines are parallel, and this is the value of d when the lines are not parallel and not intersecting, which is the skew lines. Okay, so this is the value of the shortest distance. Okay, this is the shortest distance, and every distance here, there are infinite ways we can use the calculate the shortest distances. All distances are a shortest distance. Okay, and here there is only one. Okay, so we can. I think we should do the last question. So after doing the last question, if anything remains, so I'll cover it there. So because you will also get bored not doing questions. So this question is, uh, if the vectors a vector is equal to I cap minus j cap plus 2 k cap, uh,
And next is B vector 2 I cap plus 4 j cap plus k cap. And C vector is lambda I cap plus j cap plus mu k cap are mutually orthogonal. Then lambda comma mu. Okay, so this is also based on angles between two vectors. So mutually orthogonal, uh, this means that the vectors are perpendicular. Okay, mutually orthogonal means कि making, if we make any combinations of uh, A, B, and C, those vectors are taking two at a time. These are zero. Okay, because these are perpendicular. Or A dot B is zero because these A and B perpendicular, B and C perpendicular, and A and C perpendicular. Okay, so this is equal to, this is the this is from the question. What equation one you can say, let's say, not equation but the information we have given. So when we do A dot B, it doesn't have any variable, so it will directly come as zero. Okay, which is as mentioned in the question. So this is a useless to do A and B. To just check, you can see that 2 minus 4 plus 4, or 2 minus 4 plus 2, which is 4 minus 4 is equal to 0. So this A dot B is 0. You can verify. When you do A dot C, let's see what it comes. So simply we have to consider this lambda minus 1 plus 2 mu. Okay, this is A dot, and we are taking the second vector as the C vector. So this is A dot C. Okay, and this will be B dot C vector. Okay, B dot C vector. Okay. यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं एंड दो वेरिएबल्स हैं. सो ये तो बहुत सिंपल हो गया ये वाला. तो हमारे पास डायरेक्टली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और म्यू की वैल्यू आ जाएगी. तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था लैम्डा कॉमा म्यू. सो लैम्डा हमारे पास जब -3 आ जाएगा, सो ओके, एक ही ऑप्शन में हमारे पास -3, तो डायरेक्टली हम लैम्डा निकाल के कंक्लूड कर सकते हैं. सो इफ अगर आप श्योर नहीं है तो एक बार लैम अगर इसको चेक करना है तो आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में रखेंगे, और एक बार ए डॉट सी और ए डॉट बी डॉट सी बहुत ही क्विकली आप चेक कर सकते हैं विद इन 10-20 सेकेंड्स. बट तभी करना अगर आपकी लाइक काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक होती है और आप अनश्योर है कि ऐसा आंसर आ सकता है. तो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चंस. सो whatever we have used in the questions, I have covered it very briefly. Not, I have not mentioned all the formulas. I have just said the formulas. So because you have already noted the formulas, and I have just told you the important formulas जो जो important है. And मैं एक बार वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता क्या है. So it will be 1 divided by 6 times of box. Okay. So what is box? So volume of tetrahedron box is a vector. Okay. So sorry, S1/6 of. So what is the box? You already know that it is represented as A cross B uh, dot C. So the you can shift A cross B dot C or A dot B uh, A dot B cross C. Okay. So this is the volume of tetrahedron. Okay, VT.
and volume of tetrahedron is this, and the volume of parallelepiped is volume of parallelepiped. Don't confuse with parallelogram of something because it doesn't have volume. It is a 2D figure. Okay, you know ना parallelogram कैसे बनता है? Parallelogram is parallelepiped कैसे बनता है? Parallelogram को just 3D में प्रोजेक्ट कर देंगे, so it will look like some parallelepiped. Okay, so this is simply just the box. Okay, so I'm writing just, okay, box. Box of, let's simply, this is a box. Okay, next we have, I'm just revising the formulas. So scalar triple product, you know, so this is a scalar triple product. And for one more thing, okay, so here this line, so any line, if you want to define a line, a unique line in the space, okay, so this line can be this, like this, like this. So how is it unique? It is passing through a special point, but this line is also passing through a special point, that special point, and this line is also passing through a special point. So we can say that this line is passing through a special point and a special direction. So I cannot, अब मैं कोई कोई दूसरा वेक्टर नहीं ऐसे इंट्रोड्यूस कर पाऊंगा जो कि इसी डायरेक्शन में पास करे, प्रोवाइडेड वो उसी पॉइंट से पास करे. सो एक लाइन के लिए हमारे पास एक पॉइंट और एक डायरेक्शन रहना चाहिए, तो वो डिफाइन हो जाता है एक लाइन. मतलब हम एक लाइन को डिफाइन कर सकते हैं अगर उसके पास एक डायरेक्शन है और एक पॉइंट जहाँ से वो पास कर रहा है. ओके, सो और हम लिखते हैं कि लेट्स से इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है. लाइन की इक्वेशन में से यहाँ इस चैप्टर में अभी क्वेश्चन में यूज तो नहीं हुई है, बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ. अगर ये ए पॉइंट है तो हम इसको लिख देते हैं एज ए वेक्टर. लेट्स से दिस इज द पोजीशन ऑफ ई प्लस, हमको ये डायरेक्शन ऐड करनी है. लेट्स से दिस इज समथिंग, लेट्स डायरेक्शन इज पी वेक्टर. ओके, सो हम पी वेक्टर लिख देते हैं. तो इसके डायरेक्शन में तो हम अगर इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन जनरल we can write this as lambda because we are writing a general form. So this is the equation of this line. Okay, तो एक लाइन के लिए हमारे पास एक पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए, तो सिंपली हम उससे फिर लिख सकते हैं. ओके, तो हमारे पास अब लास्टली कंक्लूडिंग हमारे पास वेक्टर्स के सारे टॉपिक जितने भी है मोस्टली कवर हो गए. और बस एरिया कवर हो गए. ओके, सिंपल एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला, एज अ फॉर्मूला ही याद रख सकते हैं इसको. एज अ फॉर्मूला में आ सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला. ओके, तो if अगर a b vector are position vectors of 2 points, so this is position vector of, let's say, 2 points. Then position vector of point which divides ab in the ratio m is to n. So how we'll calculate that? Let's say this is a vector and this is b vector. Okay, so how we will calculate a point, a position vector of a point which divides this line in the ratio of let's say m is to n. If the length of this part is n, then this part will be m. Okay, so let's say it has a position vector of c. Okay, so how we will calculate the position vector of c? So simply c is given as, we can definitely
like sometimes the C can be inside and sometimes C can be outside. So you can learn uh, a single formula and just replace positive sign by a negative sign. So what is C? This is a position vector. Okay. So this is the position vector of C. This is equal to n times A vector. A vector is this vector. This is A vector. This is B vector plus. Okay. This is M and M times then this vector. So this is very easy to remember, and we have to just divide by the addition of the ratios. It will be n plus m. Okay. So this is n plus m. So I don't need to write this formula. I'm just explaining कि this point is an internal division. Then this is plus. Okay, and if the point is external division, then just change it to minus. And here also. Okay, both changes to minus. Okay, so this is the section formula. Okay, now the moving to next. So you just have to replace with this by minus. Okay, when you are considering the an external point. Okay, so moving to next thing, which is the last, which is some simple. You need to know what is zero vector. Actually it doesn't come in any kind of question, but in a theoretical sense, if question is mentioned, then sometimes you can use this as a zero vector, or you can say a null vector. Okay, which has a magnitude of 0. And this is a this formula, and this formula, if it is better if you try to just draw two lines and draw this, take the position this, and write this formula as the projection. Don't remember this because you will always make mistake if you remember this. Okay, so this was all from me. Okay, so if you have any doubt, then you can ask. Thank you.